Welcome back to my channel Linguistics and Literature with Dr. Imran. We will begin from there where we left. So we were discussing the replies of Aristotle to Plato's charges against poet and poetry. In my previous lecture, I just covered one reply of Aristotle to Plato's charges against poet and poetry. That was based on metaphysical ground. In this lecture, we will discuss the second reply. In order to understand the second reply, you first need to watch my previous lecture. So, Plato thought the expression of emotion is harmful and the emotion should be suppressed. He thought that there are three aspects of human psyche. On the top, he puts cognition. On the second top, there is cognition. And the last one, that is affection. So the affection, emotions, and feeling arose by the poets and poetry, or artists, or painting. So they're harmful. So Aristotle replies that suppression of emotion is harmful, not expression. Same idea expressed by Sigmund Freud later on, 21 years later on. So Aristotle used the word catharsis while Sigmund Freud used the word sublimation. So both have a similar meaning. For Plato, poetry nourishes emotions, right? And it appeals the lowest aspect of human psyche or personality, that is affection or feeling. So for Plato, poetry nourishes emotions and feeling and weaken the reason. So हमारे जो सोचने का एक segment है, जो part है, उसको poetry कमज़ोर बना देती है, right? या क्योंकि प्लाटो ने हमारे साइकी को वो तीन हिस्सों में तकसीम किया था. वो समझता है कि टॉप पर रीज़न है, सेकंड टॉप पर विल पावर है, और लास्ट जो है ना वो क्या है, वो है अफेक्शन, फीलिंग और इमोशन. सो वो समझता है कि पोइट्री हमारे लोवेस्ट एस्पेक्ट ऑफ साइकी या पर्सनालिटी को अपील करती है और हमारी जो लोवेस्ट एस्पेक्ट है वो टॉप पर आ जाती है, हमारा रीज़न नीचे आ जाता है. सो हम में फिर सोचने की सलाहियत नहीं रह जाती. सो वो समझता है कि दैट्स व्हाई दैट इमोशंस एंड फीलिंग शुड बी सप्रेस नॉट एक्सप्रेस. फीलिंग वीकन द रीज़न. Aristotle agrees that poetry arouse feeling. वो भी समझता है कि poetry से feeling arouse होती है and emotion, but he does not consider it is to be harmful for the moral development of man. He says it's good that if a poetry arouses your feeling and emotion and you express them, it's good for the moral development of a man. It's not bad. So on other hand, he believed that if feeling and emotions are locked up, then they become harmful for healthy moral development of man. अगर आप feeling और emotions को lock up करते हैं, उसको आप suppress करते हैं, so बहुत सारे बीमारियों, psychological बीमारियों, disorder का शिकार हो जाते हैं. आपने सुना होगा कि जो लोग जो है ना उसके आंसू नहीं आते या वो रोते नहीं हैं, तो उसके जो इमोशंस और फीलिंग होती है वो सप्रेस होती है और फाइनली वो बंदा पागल बन जाता है. और जब पुराने ज़माने में भी इस तरह होता था, ग्रीक में जब लोग बहुत ज़्यादा उदास होते थे, खफा होते थे, तो वो किसी वीरान जगह पर जाते और ज़ोर ज़ोर से वो चलाते, तो उसके जो कैथारसिस है, इमोशन से वो बाहर आ जाते, वो रिलैक्स फील करते. वो हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपकी जो इमोशंस होती है, फीलिंग होती है, वो बाहर आ जाते हैं. सो अरिस्टोटल समझता है कि इफ दे आर लॉक अप, so that's not good. So on the other hand, he believed that if the feeling and emotions are locked up, then they become harmful for healthy moral development of man. He says that reason should be there, but it should not wipe out the emotion. Reason should be there. There should be balance between reason and emotions. If feelings are suppressed, they create lot of problem, psychological and other. It leads to moral hypocrisy. Moral hypocrisy. आप खफा हैं, उदास है, लेकिन आप हंसते हैं. सो ये मॉरल हिपोक्रेसी है. सो वो समझते हैं कि जो आप फील करते हैं आप उसको एक्सप्रेस करें.
all sort of mental disorder because of the result of the suppression of emotion. It completely destroys the moral personality of a man. So the proper thing, the proper thing to do is to give these emotion proper and socially accepted out. Socially accepted out. इस तरह भी नहीं हो सकता कि for example that you like someone and you take her or him. ये भी नहीं हो सकता. जो चीज़ आपको पसंद है और आप कहते कि मैंने उसको बस हासिल करना है, लेकिन आपने अपने इमोशंस को उसको अपने सोशली एक्सेप्टेड आउटलेट देना है कि आपके माशरे में वो एक्सेप्टेबल हो. ठीक है, बहुत सारे आप ड्रामा देखते हैं, पोइट्री देखते हैं, बहुत आप खफा होते हैं, उदास होते हैं, कोई नावल आप अपनी फेवरेट पढ़ते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, आपके आंसू निकल आते हैं, आप उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं. सो आपकी जो फीलिंग है, इमोशन है, उसको सोशली एक्सेप्टेड आउटलेट मिल जाता है. सो बोथ एक्सट्रीम्स आर रॉन्ग. पोइट्री by exciting these emotions give harmful outlet to these emotions, and in this way the effect of poetry is not bad but it is healthy and good for the mental development of personality. ठीक है, आप एक पोइम पढ़ते हैं, आप पोइट्री पढ़ते हैं, ड्रामा देखते हैं, थिएटर जाते हैं. ठीक है, सो आपकी जो पेंट अप इमोशंस होते हैं आप उसको रिलीज करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं. सो आप बीमारियों का वो जो डिफरेंट डिसऑर्डर होते हैं, साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, मेंटल इश्यूज होती हैं, वो ख़त्म हो जाती है. अगर आप उसको सप्रेस करेंगे सो आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार बन सकते हैं. तो दिस इज ओके व्हाट ही सेज. Aristotle says exactly what the same thing as was said by Sigmund Freud 2100 years later. According to Freud, what creates problem in life of man is not expressing desire but crushing them. If we suppress our wishes, desire, we do not get rid of them, but they only push it back in the subconscious. आपके वो subconscious में चले जाते हैं. सो आप फिर जो है ना पूरी लाइफ जो है ना उस चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर का. Aristotle did not know the subconscious, but he says the same thing which was said by Freud later on. Freud used the word sublimation. Aristotle used the word catharsis. Catharsis means a pleasurable outlet to the pent-up emotions. If they are suppressed, attention is created. So a way has to be found, give them an expression. Drama says Aristotle gave a pleasurable outlet to the pent-up emotion, but catharsis means something more. It also means artistic transmutations of emotion. The lower form of emotion transform high form, so a nobler process take place. It is what he means by catharsis. Aristotle replies, in the nutshell, is that it is not expression but suppression of feeling and emotion, which is harmful for moral development of personality. So that was the second reply of Aristotle to Plato, which was based on moral ground. Now the third reply is also based on moral ground. The third reply, identify yourself with others so that you can sympathize with them. So what does it mean? प्लाटो ने कहा था कि आप जब थिएटर जाते हैं, एक एपिक पोइम पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, ड्रामा देखते हैं, सो आप वहाँ जाते हैं और आप अपने आप को एक कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप अपने आप को भूल जाते हैं और यू बिकम समवन एल्स. सो आपकी पर्सनालिटी खो जाती है, यू बिकम समवन एल्स. आजकल हम देखते हैं कोई अपने किसी एक हॉलीवुड या बॉलीवुड या किसी भी एक्टर को फॉलो कर, उसके हेयर स्टाइल को फॉलो कर, उसके सोचने, उसके चलने, कपड़े का सारे वो अंदाज, स्टाइल जो है ना वो कॉपी करता है. सो वो अपनी पर्सनालिटी खो जाता है एंड ही बिकम समवन एल्स. सो इस तरह प्लेटो ने भी कहा था कि आप जब थिएटर जाते हैं, ड्रामा देखते हैं, सो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं विद वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन द प्ले. You become that person, then where you are, you lost your own personality. That was the objection of Plato, again, the third objection of Plato against poetry. So Plato's third objection was that that art leads to the weakening of personality. He said that when you watch a play or read or epic or identify yourself with the character, so you think yourself to be that characters, and
pretending to someone else, then who are you? Who are you not? So lead to the weakening of your personality, which is harmful both morally and psychologically. Aristotle answered that for the healthy development of man, it is necessary to forget ourselves and identify ourselves with others. वो समझता है कि हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी कि आप अपने आप को भूल जाएं, जो आए है आए उसको आप भूल जाएं, and you become someone else. You walk in someone else's shoes. Then you can feel that what are the worries and problems of other people are. So Aristotle जो है ना वो समझता है कि it's not bad to understand the issues, problems and worries of other people. So it is necessary to forget ourselves and identify ourselves with others. So we are too self-centered. हम बहुत self-centered बन, हम अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या नुकसान है. So we are self-centered. So if you forget ourselves and we become someone else, so this is good for the society, not bad. Okay. Selfish and oblivious to the needs of others. So art and literature make us realize the needs of others. इसे literature का काम है कि हम realize करते हैं कि और लोगों के worries and problems क्या है. हम अपने दुनिया से बाहर आ जाते हैं, हम अपने problems और worries को भूल जाते हैं और हम sympathize करते हैं, empathy करते हैं उन लोगों से जो हमसे ज़्यादा suffer होते हैं. So in great drama like Antigone, we read the fate of the man like Achilles. When the audience identify themselves with these characters, so they cease to think of their own petty desires, worries, etc. And they start sympathizing with mankind and its problems. So this should lead to the lessening of greed and selfish. हमारे अंदर जो greed है, जो selfish वो कम हो जाती है. हम कहते हैं कि ये बंदा जो है ना ये भी हमारी तरह है, अगर ये इनके साथ इस तरह हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है. हमारे जो वरीज प्रॉब्लम है वो तो बहुत कम है, इनके बहुत ज़्यादा है. सो हम अपने वरीज भूल जाते हैं. सो दे स्टार्ट सिंपैथाइजिंग with the mankind its problems. So this should lead to the lessening of greed and selfish. Therefore poetry has morally purifying influence and not opposite. So poetry is not something bad when you go, because drama was considered the highest one of the highest form of poetry, right, that time in ancient Greek time. So people would come and they watch drama. Drama was also in poetic form. So when they watch drama, they identify themselves with the character and they forgot the people, their own worries, and they became someone else. So it's not bad, something bad. It's good for the moral development of a human being. So there is a Buddha, Gautam Buddha, you might know him, was asked what the root cause of the moral and psychological alignment was. He replied that the root cause of these all alignment is you. You're the problem. It is I. I want this, my desire, my ambition, and I is the cause of all. The root of all alignment, problem, issues, that is I. Suffering, that is I. You think you're too much self-centered, right? So the remedy Buddha suggests was the doctrine of no self. Forget about yourself, no self. He went to the extent of declaring that self is an illusion and has no reality. So there is beautiful story in the life of Buddha. There was a woman, a story, right? He had only one child and he died. She came to Gautam Buddha and asked him, because he had some power, right, to make my son alive again, because I had only son, मेरा एक बेटा था वो भी मर चुका, उसको दोबारा जिंदा करे. So बुद्धा ने उसको कहा कि ठीक है मैं तो उसको जिंदा करता हूँ, लेकिन आप एक शर्त ये कि आप जाएं और कहीं से मुझे ऐसी सीड ले आए, ऐसे घर से जहाँ पर कोई फोदगी नहीं हो, जहाँ पर कोई मरा हुआ नहीं हो अब तक. So that lady, she goes door to door, and wherever she went, right, she asked and she saw that someone died there. हर घर में हर जगह पर कोई ना कोई जो है ना वो मर चुका था. So she couldn't find any seed. She came back to him and she forgot the worries and the pain of her own child, and she remembered
the worries and troubles and problems of other people. This is okay, she forgot, you see, her own self, and self was denied, okay, her own worries she forgot, and she remembered the worries and problems of other people. This is okay, good, not bad, according to Aristotle. So she stated, thinking of the sorrows of others, she forgot her own grief. She came to Buddha, not to, okay, this is a story, okay, to bring her son back to life, okay, but to show her the path to peace. The logic behind the story is that when you are obsessed with your own grief, it leads to pity and mobility. But when you drown your own sorrows, it leads to love for mankind. So she also started to love mankind because she forgot her own worries, the death of her own child. Right? This is okay. What Aristotle says, that it's not bad, it's good that you identify yourself, whether you forget your own self and you become someone else. Fourth argument of Plato charge, that is against poetry, that is not against poetry but poet. उसने कहा था कि प्लाटो ने चौथा जो उसका आर्गुमेंट था, दैट वाज इंडक्टिव. उसने कहा था कि पोइट्स जो है ना, वो हम देखते हैं कि होमर के पोइट्री में गॉड्स होते हैं, वो साइड लेते हैं ट्रोजन की और जो है ना स्पार्टा की, ग्रीक की. तो अगर गॉड्स अगर होमर के पोइट्री हम इस तरह देखते हैं तो व्हाट अबाउट देन माइनर पोइट्स. सो वो समझता है कि पोइट्स जो है ना, वो हमें पुराने ज़माने ये समझा जाता था कि शायर जो होते हैं या पोइट्स जो होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, तो वो टीचर्स होते हैं. ठीक है, उनको अच्छे लेसन्स जो है ना, मोरल्स लोगों को सिखाने दिखाने चाहिए. लेकिन प्लाटो कहता है कि हम जो है ना कोई अच्छी मोरल होमर के पोइट्री में नहीं देखते. वहाँ तो जंगें होती हैं और गॉड्स साइड लेते हैं, एक पार्टी की दूसरे पार्टी की. तो व्हाट अबाउट माइनर पोइट्स? सो पोइट्री इज़ नॉट गुड, इट मेक्स society worse, right? That was his objection. So Aristotle ने कहा कि आपका जो चौथा ऑब्जेक्शन है वो तो पोइट्री के अगेंस्ट है ही नहीं, वो तो पोइट्स के अगेंस्ट है. अगर होमर अच्छा पोइट नहीं है तो सारे पोइट्स किस तरह बेड हो सकते हैं? So Plato's fourth attack on poetry was not theoretical, but it was inductive, because he took one example of Homer and he applied that all poets are bad. So he took example of particular teachers and found fault with the moral behavior of their gods and hero. For example, Homer, we have God taking side with Greeks and Trojan. He said that poets impart teaching which is morally wholesome. He asked, so this is the kind of teaching which is going to make people morally good citizens, and when Homer does this, what must smaller poets be doing? He draws the conclusion that poetry is bad and must be poetry is bad, poets are bad and must be excluded. So उसने कहा कि पोइट का दर्जा वो टीचर का होता है, और अगर टीचर्स जो है ना हमें इस तरह के शायरी में इस तरह के दिखाते हैं कि गॉड साइड लेते हैं एक पार्टी के दूसरे के, सो अगर होमर इस तरह है तो व्हाट अबाउट माइनर पोइट्स? सो वो कहते हैं कि इसको मेरे आइडियल स्टेट से बाहर निकालें. देयर इज नो प्लेस फॉर पोइट्स इन माय आइडियल रिपब्लिक. Aristotle sees an immediate fallacy in the statements. He simply says that the charges that Plato has revealed are not against poetry but against poet. The fault is that the art of poetry. If Homer is giving a wrong teaching, the fault is not that of the poetry but of Homer. So Aristotle ने कहा कि अगर होमर जो है ना वो हमें अच्छी शायरी नहीं देता तो ये फॉल्ट तो शायरी का नहीं है, ये फॉल्ट तो शायर का है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड पर अगर आप बुरे अल्फाज लिखते हैं तो कसूर तो वाइट बोर्ड का नहीं है, कसूर तो लिखने वाले का है. सो अरिस्टोटल समझते कि शायरी इज नॉट समथिंग बैड, इट इज द होमर who is producing such kind of poetry. He does not agree with Plato that a poet is a obya. वो भी ये भी एग्री नहीं करता. प्लेटो ने कहा था कि पोइट जो है ना वो टीचर होता है, एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं, पोइट टीचर नहीं होता. ठीक है. Similarly, that if Sappho in her poetry talking about sensual delight and indulgence in pleasure, the fault
इज नॉट ऑफ द सैफोस एंड नॉट ऑफ द पोइट्री। सो ये फॉल्ट जो है ना ये सैफोस का है, पोइट्री का नहीं, क्योंकि वो उसमें सेंसुअल बातें करता है, सेंसुअल बातें करता है, तो ये तो काम तो शायर का है, शायरी का नहीं है। He says that the very criteria of judgment is wrong. Poetry function is not to teach or moralize. सो अरिस्टाटल वो डिफरेंट था इन प्लाटो और लोगों से। उन्होंने कहा कि टीचर का काम ये है ही नहीं, सॉरी पोइट का काम ये है ही नहीं कि वो सोसाइटी को मोरलाइज करे। मोरलाइज करना है वो तो मॉरलिटी का काम है, वो तो प्रीस्ट का काम है, ठीक है। और शायर या शायरी का काम तो लोगों को इमीडिएट प्लेजर देना है। सो द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज टू गिव प्लेजर, इमीडिएट प्लेजर। सो आर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू मोरलिटी। आर्ट का मोरलिटी से ताल्लुक है ही नहीं। सो और रीज़न और पॉलिटिक्स से आर्ट इज़ डिफरेंट, राइट। तो अगर आप मोरलिटी सीखना चाहते हैं तो आप जाएं, चर्च जाएं, मस्जिद जाएं, कहीं और जाएं। अगर आप रीज़न चाहते हैं तो कहीं और जाएं, अगर आप पॉलिटिक्स तो कहीं और जाएं। सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। व्हाट poetry, it has its own end. What is the end of poetry? To give us pleasure. So it is the end of ethic to tell you what is good and bad. Ethic आपको बता दें कि क्या चाहिए क्या बुरा है। शायरी का काम तो ये है ही नहीं। To build a good society and to make you a pious and good fearing man is the job of religion. वो तो आपको मजहब बताता है कि आपने किस तरह नेक बनना है। वो तो शायरी का काम ही नहीं है, आर्ट का काम ही नहीं है। सो नॉट ऑफ अ पोइट्री। सो पोइट्री का काम तो ये है ही नहीं। पोइट्री का काम ये है कि वो आपको इमीडिएट प्लेजर दे सके। So this was okay, the four objection of Aristotle, a reply of Aristotle of the charges raised by Plato. So उन्होंने कहा कि होमर जो है ना उसके पुराने ज़माने में ग्रीक के टाइम में शायर को एक टीचर भी समझा जाता था कि वो उसके शायरी में हमें अच्छे लेसन मिलेंगे। लेकिन प्लेटो ने कहा कि होमर के शायरी में तो हमें ये किससे मिलते हैं कि ट्रोजन वार तो उसमें गॉड्स ने उसका साइड लिया, इसका साइड लिया, तो ये किस किस्म की पोइट्री है। तो फिर उसको अरिस्टोटल ने जवाब दिया कि आपका क्राइटेरिया जो है ना वो जज करने का गलत है। एक तो ये कि अगर एक शायर जो है ना वो बुरी बातें करता है, सैफुज़ अपने शायरी में सेंसुअल बातें करता है, तो पोइट्री तो ख़राब नहीं है, तो पोइट ख़राब हुआ। या होमर जो है ना वो तो होमर की बात करे कि होमर ने इस तरह क्यों कहा था, आप सारी पोइट्री पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है। और फिर अरिस्टोटल ने यह भी कहा कि मोरलिटी देना ये तो पोइट का काम ही नहीं है। पोइट का काम तो इमीडिएट प्लेजर देना है, वो तो इंडिपेंडेंट ब्रांच है। और अगर आपने एथिक्स सीखनी है तो आप मोरलिटी सीखिए, अगर आपने अच्छा बंदा बनना है तो आप रिलीजन सीखिए, तो अगर आपने पॉलिटिक्स तो आप वहाँ जाएं। पोइट्री का काम ये है ही नहीं कि वो आपको अच्छे सिटीज़न बनाए। सो इसलिए उन्होंने कहा ये तो ऑब्जेक्शन जो है ना बिल्कुल बेसलेस है। सो असल में प्लाटो जो है ना ही वॉज द मैन, वो खुद भी जो है ना एक शायर भी था, एक पोइट भी था, एंड ही वॉज द एनिमी ऑफ पोइट्री आल्सो। दैट इज़ लाइक आयरनी। ही वॉज अ पोइट अमंग फिलासफर। उसकी जो डायलॉग है रिपब्लिक, तो वो सारे जो है ना उसकी स्टाइल वो आप देख ले तो वो पोइटिक है, लेकिन वो पोइट्री के खिलाफ भी था। Anyhow, some other time we will discuss this. Thank you so much. Please do provide your valuable comment, and in next lecture we will discuss the concept of tragic hero given by Aristotle. See you then. Thank you so much.